What is it? More technical assistant. How you going? On the meet. start करें विद्या ये technical assistance. Okay. हो गल बेटा के क्लास हां कैमरा हां ये कैमरा का है वाला बेटा आई जा फर्स्ट है एक घंटा वही टेक्निकल असिस्टेंट नहीं एक बार एक तो मैं क्या नाम है सिंगल स्क्रीन लेगा सिंगल स्क्रीन मेरे उधर 300 वाले हां 300 के साथ होते हैं ये आपके मुझे टॉपिक आना क्या है आपका टॉपिक ये दो है तो वो नहीं बात सही है नोटबुक वगैरह क्या प्रोसेस है ये जो पूरी स्क्रीन ले रहा है ना मैं डेमोस्ट्रेट कर देखा मैंने उसकी सिंगल एउटा मात्र आउनु यति आउँछ Hello, good morning everyone. Good morning children. Am I audible? I think. Please response anyone school. JNB boy, please response. Am I audible or not? JNB boy, please respond. Yes, sir. Okay, sir. So, children, this program is called as SADHANA. It is this program is conducted by NVS RO Shillong and name is given as SADHANA Program. So, children, main objective of this program is to get minimum passing marks to the children. Those who are not able to get minimum passing marks in the minimum passing marks. Yes, sir. The presentation you're showing is cascading, sir. Yes, sir. You are presenting also and you are pinning your own image. Please unpin one of the image. Sorry, sir. Please unpin one of the image, sir. Because. Hello, sir. सर आपका जो आपने दो ये पिन करके रखा है आपका इमेज के अंदर ही आ रहा है कास्केडिंग हो रहा है सर मेरा वॉइस आ नहीं रहा है क्या सर योर प्रेजेंटेशन इज नॉट कमिंग प्रेजेंटेशन
Presentation. Yes. Yes, presentation. Okay, sir. Hear me? Activity वाली। हाँ, पीछे वाली। यस सर, प्रेजेंटेशन अभी हम करेंगे सर, अभी उसको ऑन नहीं किया प्रेजेंटेशन को। हेलो सर, हेलो, Yes, sir. मेरे वीडियो आ रहा है ना सर? हाँ, अभी आ रहा है। वीडियो आ रहा है ना? Some candle, something is यस, outside. कैंडल some material light, it is coming ना? हाँ, आ रहा है। ओके सर। So children, ये साधना, Yeah, candle, one candle and this thing. yes sir, okay sir, okay. So children, this sadhana program is organized by NVS RO Shillong to get the minimum passing marks in the subject like a science, maths, and your objective and our objective is same, to get the pass marks, minimum pass marks. Hello. So we try to give you bit different way so that you will able to get minimum passing marks. Okay, children. So today I'll discuss here one topic, that is chemical reactions and equation. Right. So I will use the bilingual Hindi and English. Okay. So children, इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, that first chapter is a chemical reaction and equation. And as you know that हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम लोग कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो इस तरह से अभी हम भी यहाँ पर एक अगरबत्ती जलाएंगे, लेकिन वो अगरबत्ती थोड़ा डिफरेंट है, वो अगरबत्ती थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये हमारा अगरबत्ती है, आपको मैं नजदीक से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा अगरबत्ती है और ये अगरबत्ती का नाम शायद आपको पता है। दिस इज ए अगरबत्ती, इट इज मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। तो इसको जलाने के पहले हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते अच्छा, हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। किरण सर, एक मिनट सर। यस सर। एनीथिंग रॉन्ग सर? I all the other JNBs, please mute your microphone. All the other JNBs, please. Nirul sir, am I audible correctly? Yeah, you are audible, sir. You are audible. But some of the microphones are on. Yes, somewhere it is on here. Please. Continue, sir. Okay. So ये मैं आज अगरबत्ती लेके आया, ये स्पेशल अगरबत्ती है और हम इसको अभी जलाएंगे। You know that किसी भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम जलाते हैं इसको, तो इसको हम पहले थोड़ा साफ कर लेंगे। ये साफ क्यों करना, आपका एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको साफ, अगरबत्ती को साफ क्यों करना होता है, राइट? सो हम इसको इसे साफ करते हैं। यहाँ पर जो ऑक्साइड लेयर होगा, दैट शुड बी रिमूव परमानेंटली। ओके, सो हम ये अगरबत्ती को जलाएंगे। नूरल सर, आई विल बर्न दिस अगरबत्ती नाउ। हाँ, yes sir, please carry on, sir. Okay sir. So I think it is coming in a camera also. It is a agarbatti, a special type of agarbatti. Generally we burn in any program before starting this program. So ये हम अगरबत्ती लेके आए केमिस्ट्री लैब से और इसको अभी हम जलाएंगे। टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है इसको जलने में। ये जल जाएगा, थोड़ा ही देर में आपको जलेगा। ये हमने क्लास में भी आपको दिखाया माय डियर चिल्ड्रन। ये जरूरत से थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, तब तक तो जल जाना चाहिए था। ये अब तक जलना चाहिए, लेकिन अभी जल नहीं पा रही है थोड़ा।
हम रुकते हैं इसको। अरे जल रहा है, शायद ये अगरबत्ती कुछ खराब है, जल नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं जला के दिखाऊंगा अगरबत्ती। आपका ये एक्टिविटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और जो मैं होल्ड करके रखा है इसका नाम है टोंग्स। देखिए, अभी मैं 2 मिनट पहले क्लास का पहले जलाया, उस समय जल गया, लेकिन अभी ये मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, क्लास का पहले मैं जलाया। चलो बच्चा, आप भी एक आ जाओ, आ जाओ, एक एटा ले लो, फल को ले लो। शायद ये आज शुभारंभ होने के लिए नहीं मान रहे, तो थोड़ा वक्त लग रहा है। जल्द वसंत की उल्लू आती, एटा करो उल्लू वसंत मांगा। हम और एक पीस अगरबत्ती लगा लेते हैं, कोई तो जल जाएगा। शायद मुझे स्प्रिट लैम्प लेना था इसमें। चलो मम्मी जाओ। ठीक है, मैं इसको दिखाऊंगा। अभी हम दूसरे और चलते हैं। आ जाइए, मैं मेरा टेक्निकल असिस्टेंट को बताते हैं कि वो जला रखे इसको। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज, बंद इसको। So children, this is activity. Now I am showing you one more activity. चला, it will going on, and by the time I am showing you one more activity, that is a reaction between a compound. This is called as a lead nitrate. Okay, lead nitrate. Lead nitrate. I will prepare a solution of lead nitrate. It is a solution of lead nitrate, children. It is a clear solution. लेब में जा, टेस्ट फोल्डर टेस्ट ट्यूब ले रहा है, छोड़ दे, टेस्ट ट्यूब पेस्ट नहीं। So in this lead nitrate, it is a clear solution, lemon, clear solution, and in this solution I am going to add one more reagent, that is it is potassium iodide, Ki solution, potassium iodide solution. I am mixing these two, and children you see, what is this color, children? Yellow color precipitate is formed. Okay, so this is one chemical reaction. Why I am showing you this activity? Because name of this chapter is a chemical reaction and equation. Right. So here a reaction is carried out. यहाँ पर एक रिएक्शन आपको हो गया। क्या रिएक्शन है? कौन सा प्रोडक्ट बना? ये येलो क्यों दिखा? These are the very vital question. Okay. और ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में अभी तक 10 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है। More than 10 times this question is asked in CBSE examination. Right. What is the color of precipitant? What is the name of that compound? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ये करके दिखाया। ओके, और एक एक्टिविटी करेंगे थोड़ा बाद में, और करेंगे हम। तो चिल्ड्रन, हमारा मकसद ये है कि आपको जैसे भी आपको
नंबर दिलाना है एग्जाम में, राइट? So chemical, what is chemical reaction? If I ask you, then what is chemical reaction? So chemical reaction is all kind of chemical changes, right? All kind of chemical changes are called as a chemical reaction. So chemical changes are those changes in which new substances of new properties are formed, right? Now I'm going to share your screen now, presenting now. Nurul sir, this page is coming or not, sir? Chemical reaction and equation, this page is. Please respond, any one of you. Chemical reaction and equation, this page is coming or not? माइक्रोफोन ऑन करके एक बार बताइए. Coming, sir, but ओके 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 सर, ओके. it's So very what is small chemical reaction and what is one. Can chemical you make equation? it little bigger? Yes, sir. What is chemical reaction and what is It's chemical? coming. ओके ओके सर, ओके. केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या है, हम इसको अभी आपको बताएंगे, राइट? सो जब मैं आपको एक्टिविटी दिखाया, एक्टिविटी 1 जो था, जो कि कुछ वजह से सक्सेस नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा जरूर दिखाऊंगा लास्ट तक. इन दैट केस वी हैव टेकन स्टेट, चलिएगा सेट उठो, हाले कुछ डब्बा उठो, हाले कुछ स्टैंड स्टैंड 10 ले रहा था बुरवांग का लग. So children, this is a magnesium ribbon, magnesium ribbon, and it is burnt. So how to write magnesium? It is react with oxygen and it gives magnesium oxide solid, right? It is a reaction. It is a chemical reaction. What is a chemical reaction? जैसे मैग्नीशियम जलाया गया ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, that is chemical reaction, right? और उस chemical reaction को, that chemical reaction is represented by using what? Symbol and the valency. Symbol and the formula. That is called as a chemical equation. Okay. So ये हो गया आपका, this is chemical equation. Magnesium react with oxygen to form a magnesium oxide. It is a chemical equation. Okay children. So कोई भी हो सकता है. Suppose nitrogen combined with hydrogen, then we get a product which is called as a ammonia. It is a chemical equation. Okay. So chemical equation is a representation of chemical reaction, right? So इसमें सबसे important point है, that point is how to write a chemical formula, है ना? केमिकल फॉर्मूला लिखने आपने क्लास 9 में सीखा. हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके लिए भी हम थोड़ा बात कर लेंगे अभी. और जो आपको ये आपको जो रिएक्शन दिखाया मैंने, लीड नाइट्रेट, द फॉर्मूला इज PbNO3 whole 2. This is lead nitrate. It is a white powder. Then it is mixed with potassium iodine. Then you're getting a product that is a PbI2, lead iodide and potassium nitrate. This is yellow. आप इसको लिख लीजिए because this reaction is very very important.
This is very, very important. Lead iodide plus potassium nitrate. Okay. The yellow color is due to formation of lead iodide. It is a chemical equation. Okay. So chemical reaction may be represented by using the formula and the symbol which is called as a chemical equation. Right. So next point is what are the characteristics of a chemical reaction? अब इसको थोड़ा नोट कर लें. That means when to say that a chemical reaction is occurs. हम कब बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ. राइट. अगर आपने एक पेज फाड़ के दो बना दिया, दैट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन. ओके. आपने पानी बॉईल कर दिया, पानी बॉईल करके वेपर बन गया, दैट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन. राइट. सो केमिकल रिएक्शन होने के लिए आपको एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए. राइट. नया सब्सटेंस बनना चाहिए. So let us see what are the characteristics of chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ये आप नोट कर लें. What are the characteristics of chemical reaction? So chemical reaction का characteristics है आपको number 1 change in color, number 2 change in temperature, number 3 evolution of gas, number 4 change in state. Change in state. These are characteristics of a chemical reaction. Okay. So आपको एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं कि राइट 4 characteristics of a chemical reaction. ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा नहीं. लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीट में हेलने तो कोई ज्वाइन करना. सो दैट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा आपको मिल सकता है कि chemical reaction occurs or not, please identify. That type of question you may get there. Right. समझ गए. নহয় বেছি কৰি কৰিছে কোনে কোনে নেকি আপোনাৰ কোন পাই আছে না মই কম হোৱা গৈছে হ'ব পঢ়াই দিম চলো. साउंड बढ़ा दो. साउंड बढ़ा दो. Full. Okay. So yes, come to the board. Come to the board. Page two. Yes. So when we can say that a chemical reaction is occurs. One is a change in color. Second is change in temperature. Third is evolution of gas. Fourth is change in state. Right. Change in color. कैसे चेंज होगा कलर? अगर आपने मिक्स कर दिया दो सब्सटेंस और उसका कलर चेंज हो गया, दैट इज चेंज इन कलर. यू माइट हैव नोटिस, आपने देखा होगा खाने का टेबल में हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, उसमें भात रहता है और थोड़ा सा नींबू नचेड़ दीजिए, तो आपको क्या कलर मिलेगा? We get the blue color. Why it is? Because in salt there is iodine, lemon there is a citric acid, starch is act as a indicator. So this is one example that color is changed. Right. In any reaction by mixing two, if color is changed, then that is we can say that a reaction is occurs. Change in temperature. When we mix two compounds, then there may be increase of temperature or there may be decrease of temperature. If temperature is increased or decreased, then we can say the reaction is occurs. Right. You know that चूना limestone है ना, या calcium oxide when it is mixed with water, we get calcium hydroxide. In this process a large amount of heat is
release. A large amount of heat is released, so it is a chemical reaction. Right, it is a change in temperature. Sometimes by mixing of two substances, temperature is decreased. That is also a characteristic of chemical reaction. Okay. So evolution of a gas, gas, gas बनना है ना कैमरा में गैस हम आपको और एक एक्टिविटी दिखाएंगे by mixing two component by mixing two component gas will evolve. Okay, so for that activity you see I'm taking here one metal. It is known to you, very common metal. This is a metal. It is zinc metal, metallic zinc. I will take this metallic zinc in the test tube and I will add here one acid, that is a dilute hydrochloric acid. You know the formula of dilute hydrochloric acid? While you mix these two reagents, you see bubbles are coming. Okay, so evolution of a gas is formed. Gas is formed. So definitely it is a chemical reaction. Right, children? This is a chemical reaction. What reaction occurs? I will write back to the page. So I will explain here what gas is evolved, and we can prove the formation of this gas by some method that I will explain. It is also a very important question. So evolution of a gas. I took there the जिंक मेटल, हमने वहां पर जिंक मेटल लिया और इसमें क्या डाला? उसमें हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड. A compound is formed, that is a zinc chloride, plus a gas is evolved, that gas is hydrogen gas. Okay, so this is a characteristic of a chemical reaction that gives this gas is evolved. यहाँ से आपको gas evolution हो गया, so this is a chemical reaction. Right, children? So this gas evolved, तो हम इसको arrow mark करके इसको लिखते हैं. Right. So next is a change in state. Change in state, all change in states are not considered as a chemical characteristics of a chemical reaction. जैसे आपने पानी गर्म कर दिया, उसका वेपर बन गया. This is not at all considered as a chemical reaction. वो नहीं है. But in this reaction, you see, so here, which I explained earlier, this reaction. This reaction is here. I took two aqueous medium substance, lead nitrate solution, potassium iodide solution. By mixing these two, a solid material is formed. A solid material is formed. So this is a change in state, right? It is a change in state. Two aqueous substances mixed together, then we are getting a solid material. It is a chemical change where state is changed. One more, wait. One more very common example. Here you see, this is a burning candle. It is a burning candle. Candle burns, it liberates heat, light, energy, carbon dioxide, water vapor. This is a chemical change. But at the same time, you see, there is a melting of candle also. There is a melting of candle. So this is not a chemical change, it is a physical change. So in the burning of candle, two processes occur at the same time. One is chemical change, another one is a physical change. Right? So that is our digestion of a food. It is chemical change. Digestion of a food is a chemical change. Right? But cooling the water, it is physical change. So again, I tell you, these are four characteristics of a chemical reaction: change in color, change in temperature, evolution of gas, and change in state. Last one is see, change in state.
I took there PbNO3 in aqueous medium. Solid PbNO3 is mixed with water. Then it is mixed with potassium iodine in aqueous medium. Then we obtain the product PbI2. This is solid. This is solid, and potassium nitrate aqueous. Okay. So there is a change in state. There is a change in state. Okay. So these are the four characteristics of a next page. Characteristics of a chemical reaction. Come to the next page. Chemical equation I already explained. What is a chemical equation? It is a representation of a chemical reaction. Just a minute. So suppose zinc is react with HCl or sulfuric acid. Zinc is react with sulfuric acid, H2SO4. We get zinc sulfate plus hydrogen gas. It is a chemical equation, right? It is a chemical equation. Chemical reaction is a zinc react with sulfuric acid to give the zinc sulfate and hydrogen gas. It is a chemical reaction. Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2 is a chemical reaction. Okay, come to next page. So these chemical reactions are classified into two heads. Chemical reactions are classified into two heads. One is called as a balanced chemical equation. Another one is called as a unbalanced chemical equation. What is balanced chemical equation? Say zinc react with H2SO4. We get zinc sulfate plus hydrogen gas. Whether it is balanced, what is the meaning of this word balance? Balance means the left hand side number of atoms, right hand side number of atoms should be equal for all elements, है ना? यहाँ पर एक जिंक है, two hydrogen, one sulfur, four oxygen. So this reaction is a balance. Okay, this reaction is balance. But you see, zinc react with HCl. We get ZnCl2 plus H2. चला है एक तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया. So here you see that one zinc, one hydrogen, two hydrogen, one chlorine, two chlorine. So this reaction is not a balanced chemical reaction, right? Why it is not balanced? Because number of hydrogen and chlorine is not equal. Okay. So this is balanced and unbalanced chemical equation. So we have to balance chemical equation. So why to balance chemical equation? It is another question. Why to balance a chemical equation? What is the necessity for? It is a very important question, है ना? So why to balance chemical equation? We have to balance chemical equation to satisfy the law of conservation of mass, right? So chemical equation क्यों balance करी बोला गया? Chemical equation क्यों balance करना चाहिए? एक बहुत important question है. So chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass. Okay. So what is law of conservation of mass? This is given in class 9 syllabus. Law of conservation of mass is mass of product for any reaction. Mass of product in any reaction is equal to mass of reactant. Right? Mass of product is equal to mass of reactant. Mass neither be created nor be destroyed in the chemical reaction. It is called as a law of conservation of mass. Okay.
So to satisfy this equation, we have to balance a chemical reaction. So children, again, हम भी आपको 15-20 मिनट पढ़ाया, मैं एक बार बता देता हूँ. पहले हमने एक मैग्नीशियम रिबन जलाने से उसको पहले साफ करना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड, ओके, और कार्बोनेट. फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड आपको एक्टिविटी दिखाया, लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट का. राइट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. कैरेक्टरिस्टिक कितना है? चेंज इन कलर, change in temperature, evolution of gas, change in, right? These four are the characteristics of a chemical reaction. Chemical equation is a representation of chemical reaction with the help of symbol and formula. Chemical equation may be balanced or it may be a unbalanced, right? Chemical equation may be a balance or it is a unbalanced chemical equation. Balance equation क्या है? Those reactions in which all atoms are equal in number, left hand side and the right hand side, that is a balance. और जिसमें equal नहीं होता, that is called as a unbalanced. So why to balance a chemical equation? We have to balance a chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Okay. What is law of conservation of mass? In a chemical reaction, mass of product is equal to the mass of reactant. हम जितना मास लेंगे रिएक्टेंट का, उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलेगा. Right? That is called as the law of conservation of mass. Right? So another very big question is, that is how to balance a chemical equation. Right? How to balance a chemical equation. So it is a bit difficult to balance a chemical equation. फिर भी हमको थोड़ा कोशिश जरूर करना है कि एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए. और आपका एग्जाम में बहुत नया आएगा नहीं, जो हमारा सिलेबस में है उससे भी पूछता है, जो हमारा टेक्स्ट बुक में है उसी से पूछता है ना. इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरी है. फिर भी मैं आपको एक दो ट्रिक बता देता हूं जिससे आप बैलेंसिंग इजीली कर सकें. राइट. लेट अस टेक वन एग्जांपल, that is hydrogen react with nitrogen, we get ammonia. This is unbalanced chemical equation. Equation is not balanced. आपको चेक करना है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन. So it is not balanced. Right? So आप हाइड्रोजन को 2 बना नहीं सकते हैं, नाइट्रोजन को 2 आप जरूर कर सकते हैं. So right here 2, nitrogen is 2 now. How many hydrogen? 3 into 2. देखिए 2NH3, 2NH3. This means that NH3, 1 NH3 plus 1 more NH3. This is 2 NH3. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं twice x. Twice x means what? X plus x plus x. That's twice x. Right? So 2 NH3. How many nitrogen in 2 NH3? In 2 NH3 we have 2 nitrogen and we have 6 hydrogen. Right? So यहाँ पर जो नंबर होगा, आगे में जो नंबर होगा उसके साथ इसका लोअर पार्ट का नंबर इंटू करो, आपको कितना एलिमेंट है, कितना एटॉम्स है, मिल जाएगा. So here we have 6 hydrogen. तो 6 हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ पर 3 डाल दीजिए, आपका हो गया, है ना. बट चिल्ड्रन यू से आप जब भी बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने से ये नीचे वाला पार्ट को आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो बदली नहीं होगा. ये नंबर कहां से आते हैं? एलिमेंट का बैलेंस ही होगा, दूसरे साथ कितना कंबाइन कर रहा वो है. सो ये नंबर आप, जैसे ये 3, व्हाट इज दिस 3? दिस 3 इज ए वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन. राइट. सो आप इसको कभी भी चेंज नहीं करना, ठीक है. बट इन फ्रंट यू कैन पुट एनी नंबर, you can put any number in front that to balance a chemical equation. Right. अभी और एक एग्जांपल देखिए. नूरुल सर, इट इज कमिंग.
Coming, sir. Coming. Okay, sir. Okay. So this is a chemical equation, and you have to balance, right? So देखो बच्चा, जब भी आप बैलेंस करेंगे, ऐसा जो डायटोमिक फॉर्म में होगा, डायटोमिक फॉर्म मीन्स diatomic form means yeah. This one. So O2 डायटोमिक फॉर्म्स जो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे H2 है, Br2, Cl2, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्पेसिस आपको इक्वेशन में है, सो दैट शुड बी बैलेंस एट द लास्ट, है ना? आप उसको पहले बैलेंस मत करो, उसको लास्ट में बैलेंस। नाउ यू चेक, 1 carbon 1 carbon balance, 4 hydrogen 2 hydrogen not balanced, 2 oxygen 3 oxygen, it is also unbalanced, right? तो पहले क्या को बैलेंस करेंगे? फर्स्ट बैलेंस नहीं, ये ऑक्सीजन देखो डायटोमिक फॉर्म में है, उसको आप लास्ट में बैलेंस करो। ओके, तो फर्स्ट आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। 4 hydrogen, so right here 2 hydrogen is balanced. Okay, oxygen, now you check, 2 oxygen 2 4 oxygen, so make it 4, right here 2, it is balanced. Okay, so I'm giving you, taking one more example. Say lead nitrate on heating we get, लिखते जाना है, PbO plus NO2 plus O2। ये क्वेश्चन बहुत बार आया सीबीएसई एग्जाम में, राइट? सो इसमें आप देखिए NO3 whole 2, how many nitrogen? You have 2 nitrogen. How many oxygen? 6 oxygen. This side 2 4 5 oxygen. Okay, one lead, one lead. तो आप पहले नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, सो फर्स्ट बैलेंस which one? पहले आप क्या बैलेंस करेंगे? फर्स्ट बैलेंस नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन ये डायटोमिक फॉर्म में है, तो आप इसको लास्ट में बैलेंस कर, राइट? सो पुट हियर 2, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ चेक द लीड is already balanced. Now check oxygen, 3 into 2 6 oxygen this side यहाँ पर 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2, 3 4 5 6 7 oxygen in the right hand side. Okay, तो आप क्या करेंगे? आप इसको दिस साइड टोटल नाउ इट इज 7, तो इसको 6 करना है ना? 6 करना है। सो वन वेरी सिंपल वे, राइट हियर हाफ। हम इसलिए बताया कि आपको जो डायटोमिक फॉर्म है उसको लास्ट में बैलेंस करना। यहाँ पर हाफ लिख दो। अभी यहाँ पर कितना हो गया? नॉट 2 ऑक्सीजन, नाउ हियर इज 1 ऑक्सीजन, 4 5 6 ऑक्सीजन, इट इज बैलेंस। ओके, सो आप इक्वेशन को यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो यू मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशन बाय 2 से इंटू कर दीजिए, 2 से इंटू कीजिए तो आपका मिलेगा 2 PbNO3 whole 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अगर आप इक्वेशन को आप यहां पर छोड़ते हैं, ये भी कंप्लीटली बैलेंस है, वहां पर भी आपको नंबर मिलेगा, राइट? ब्लैंक। So children, I am giving you one question. Please try to solve it.
Blank, blank. So अब इक्वेशन छोटा सा इक्वेशन है FeSO4. This is actual question. On heating, we get Fe2O3 plus SO2 प्लस SO3. अब इसको 1 मिनट में बैलेंस करो. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किरण सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। जी सर हम थोड़ा एक काम देके ऑन कर, एक क्वेश्चन देके रखा है सर, फिर मैं ऑन करता हूँ इसको। किरण सर जी सर कमिंग डाउन आ रहा है सर। दैट इज कमिंग सर। एक सेकंड सर। किरण सर यू आर नॉट ऑडिबल। यस सर। Sir, we are not audible. किरण सर यस सर, एक मिनट। हाँ ठीक। ओके सर। Not audible, sir. ओके जस्ट अ मिनट। अच्छा सर, एम ऑडिबल नाउ? यस नाउ ऑडिबल सर। Okay. So any school please response and tell me the answer of this question. JNB Riboy, प्लीज आप माइक ऑन करके आंसर बताइए, इसको बैलेंस कीजिए। Yes, sir. Yes, tell me the answer, correct answer of this question. Tell the answer. Okay children, I'm not taking much time. So here is a iron 2, oxygen 3, 4, 5, 6, 7, 8, sulfur 2. Here iron 1, sulfur 1, oxygen 4. Iron 1, sulfur 1, oxygen 4. This side iron 2, sulfur 2, oxygen 3, 3, 2, 6, 7, 8. So this is exactly double. So it Excuse is me, sir. yes sir. Yes, Sir, screen is not visible. screen. Yes. Now tell me. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. So here is this is exactly double in the right hand side. So बताइए, जो लास्ट माइक ऑन करने के बोल रहे थे, इसको बैलेंसिंग बताइए आप। So वेरी सिंपल, आप यहाँ पर 2 डाल दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ओके
So children, it is a bit time taking process. So we have a limited time, so I will not concentrate much more here. Now I am proceeding to next topic. आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना? 10, 20, 25 प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आ जाएगा. Now come to the new point. That is a chemical reaction you have understood. Now what are the different types of chemical reaction? Right. So chemical reactions are classified in these four broad heads: combination reaction, decomposition reaction, that is maybe thermal decomposition, electrolysis, photolysis, displacement and double displacement. These are the different types of chemical reaction. So time थोड़ा limited है. नरोज सर, हम तो 1-1.5 घंटा में होगा नहीं सर ये तो. So ऐसे combination meaning, what is the meaning of this word combination? जोड़ना, है ना? 2 मिलके, 3 मिलके, 4 मिलके 1 बनाना, that is combination. जैसे राम और रहीम जेएनबी में आने का पहले, राम और सुनील जेएनबी में आने का पहले कहीं दूसरा जगह पर घूम रहा था वो लोग, है ना? जेएनबी में आ गया, दोनों एक साइड बैठ गया, दिस इज कंबाइन हो गया. इट इज ए व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. When two or more reactants combine to form a single product, है ना? Two or more, A plus B gives a new product C. It is a combination reaction. बहुत सारा एग्जाम्पल है. आपको एग्जाम्पल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, we get carbon dioxide. It is a combination reaction. टू और मोर रिएक्टर, हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस में 2 ही रिएक्टर वाला दिया गया है. कैल्शियम ऑक्साइड react with water, we get calcium hydroxide. It is a combination reaction. So children, अभी सीबीएसई में क्या किया है, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब भी आपको एक प्रोडक्ट, एक टाइप का रिएक्शन, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं कर रहा है. कॉम्बिनेशन के साथ और क्या टाइप का रिएक्शन है ये, वो भी पूछता है. राइट. सो इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दोनों, है ना? कॉम्बिनेशन एंड एक्सो. बट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक, बट इन दिस केस व्हाट इज गिवन इन आवर सिलेबस, सो इट इज ए कॉम्बिनेशन एंड इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनना. वेरी सिंपल. डेफिनेशन पूछेगा नहीं आपको. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आएगा. अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करना, एग्जांपल देना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा. राइट. सो सेकंड वन इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ना, है ना? अभी क्या नाम इसका, पॉल और ईश्वर, पोल और ईश्वर दोनों एक साथ बैठा है. पोल एंड ईश्वर, सॉरी, पोल एंड ईश्वर दोनों एक साथ बैठा है ना? इसको, ये दोनों का दोस्ती अच्छा नहीं लग रहा है. किसको अच्छा नहीं लग रहा है? रूपज्योति को अच्छा नहीं लग रहा है ना? कोई रूपज्योति है जो इसका दोस्ती को अच्छा नहीं कर पा रहा है इसको, है ना? तब क्या करेगा? इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है ना? तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं और दोनों को कुछ ना कुछ करके 2 साइड में डिवाइड कर दिया. दिस इज डिकम्पोजिशन. राइट. इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ए पेयर, 2 एक साथ था, बहुत खुशी था, बढ़िया से था, है ना? दोस्ती अच्छा था उनका, पोल और ईश्वर का, लेकिन बीच में आ गया, भाई उसको पसंद नहीं हो रहा है, दोस्ती उसका जल रहा है, कि हो सकता है उसका कुछ इंटेंशन हो, उससे दोस्ती करना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो उसमें उसका दोस्ती को तोड़ दिया. दिस इज डिकम्पोजिशन. इट इज ए ब्रेक डाउन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. अभी देखो सो ये जो दोस्ती है, दोस्ती तोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है ना? सभी दोस्ती को हम बहुत इजीली ब्लैक बटन, सब दोस्ती को हम बहुत इजीली तोड़ नहीं सकते हैं. राइट. कोई दोस्ती होता है जो
जैसे ईश्वर, पोलास और ईश्वर का दोस्ती उतना स्ट्रांग नहीं था, जो कि थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया, वो दोस्ती टूट गया, राइट। अभी आओ दूसरा एक, ऋषिता एंड कमोनिका। ऋषिता एंड कमोनिका, ये दोनों बच्चे हैं, उसका दोस्ती बहुत स्ट्रांग है ना। इसका दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा फोर्स करो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक। सो जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन कौन करेगा? ब्रेक डाउन करेगा नंबर 1 हीट। हीट से ब्रेक डाउन हो सकता है, नहीं। नंबर बी, दैट इज लाइट। लाइट से ब्रेक डाउन हो सकता है। नंबर सी, क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये थ्री टाइप्स है रिएक्शन को, क्या बोलते हैं, कंपाउंड को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ओके। तो रिएक्शन, decomposition reactions which are carried out by applying heat is known as a thermal decomposition. It is called as a thermal. जो हीट से ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट, बाय अप्लाइंग हीट, ए कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन। एक आध एग्जांपल याद कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate, heat is written by this symbol delta. Calcium carbonate, on heating we get calcium oxide and carbon dioxide. It is a thermal decomposition. It is a thermal decomposition reaction. Those reactions which are carried out by supplying heat, okay. So आपका किताब में जो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल पूरा ध्यान से देखो। 2 एग्जांपल है, एक मैं आपको दोनों में लिखा चुका ऑलरेडी। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, दिस इज ग्रीन, प्लीज नोट डाउन, ये आपको ग्रीन कलर का होता है। मैं बताता हूं, आप थोड़ा कैमरा ऑन करें, कैमरा में आ जाए। ये है, आपको दिख नहीं पाएगा शायद वहां से, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का। ये मैं बिल्कुल कैमरा के पास जाके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सब्सटेंस है, दिस इज फेरस सल्फेट, और इसका रंग है ग्रीन कलर। हम इसको जस्ट बैक टू द पेज, जब हम इसको हीट करेंगे, when heat is supplied from the outside, black, yes, when this is heated, green color substance is changes to Fe2O3, और वहां से स्मेल आएगा, burning sulfur smell due to formation of SO2 and SO3, right. It is a thermal decomposition. It is a thermal decomposition reaction. और एक है lead nitrate. Lead nitrate, this is a white color substance, lead nitrate. When this is heated, ये भी हमारे पास है, लेकिन इसमें गर्म होगा कि नहीं पता नहीं। When this is heated, we get PbO plus NO2 plus O2. So यहाँ पर आप देखिए, एक ही रिएक्टेंट है, one reactant. Ferrous sulfate is a reactant, lead nitrate is a reactant. On heating हमको ये 3 कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ भी 3 कंपाउंड मिल रहा है। So it is a decomposition reaction. ये decomposition कौन कर रहे हैं? By applying heat, right. So this is called as a thermal decomposition. Thermal decomposition, ये 2 एग्जांपल है आपका किताब में, और ज्यादा एग्जांपल नहीं है, आप दोनों को याद कर लो, ठीक है। 2 ही थर्मल डिकम्पोजिशन का 2 ही रिएक्शन है आपके पास। So it is a thermal decomposition reaction. And second one is this is called photolysis, the reactions which are carried out by applying a light.
सनलाइट, है ना, सनलाइट। सो इसके लिए आपको किताब में 2 एग्जाम्पल हैं, दैट इज one example, 19. So we have blank page. So we have 2 examples in our syllabus regarding this one, decomposition by light. One is a silver chloride. This is white color, white. When this is exposed to sunlight, when this is exposed to, when this is exposed to sunlight, then it converted to as a gray color. ये जो रंग थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, है ना, ग्रे कलर सिल्वर एंड chlorine gas. This reaction is carried out by sunlight. Okay. One more example, silver bromide, which is given in the syllabus. There are many reactions, children, but our syllabus given only few. ऐसा नहीं कि लाइट का रिएक्शन 2 ही है, बहुत दुनिया में बहुत सारा रिएक्शन है, but in our syllabus only given few. So we get here silver and bromine gas. These reactions are carried out by sunlight. These reactions are carried out by the sunlight. So it is called as a photolysis reaction. So decomposition can be done by heating, that is called thermal decomposition. उसका 2 example. Or decomposition can be done by passing electricity, that one, keeping material in the sunlight. We have 2 example. Third one is a electrolysis, है ना। देख मैं पहले बताया दोस्ती क्या बात है यहाँ पर। अगर AB के बीच दोस्ती है, इसको तोड़ने के लिए पहले हमने हीट दिया, हीट अप्लाई किया, ये नहीं तोड़ सका, है ना, बहुत मजबूत दोस्ती है उनके बीच। फिर हमने क्या किया, इसके लिए गर्म पानी में, गर्म में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, ये भी इसको तोड़ नहीं सका, ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, दोस्ती मजबूत है ना, तो उसको तोड़ नहीं पाया। अब क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन हम उसके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे भाई, तब तो टूटना ही टूटना है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से टूटना ही टूटना है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? द प्रोसेस इन व्हिच a substance is decomposed by passing electric current. This is called as electrolysis, right? So in our textbook, only one example of electrolysis is given. Only one example of electrolysis is given, that is the electrolysis of water. Right, children? Electrolysis of water. So when इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में 2-3 क्वेश्चन है, मैं उसका आपको बता देता हूँ एक बार। आपको एक बीकर, कहीं भी देखो किताब में भी दिया हुआ है, टेक ए बीकर, प्लेस हियर 2 electrodes and fill this beaker with water, और इसको आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको आप बैटरी में जोड़ देना है ना। कभी कभी डायग्राम देके भी क्वेश्चन उसमें पूछता है। Here is a water in a beaker, 2 electrodes, one is connected to positive terminal, another one is connected to negative terminal of the battery, right? और इसका कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लाइक ए सॉल्ट वी कैन पुट। अब क्या होगा इसमें, अभी देखो, अभी तक तो कोई तोड़ नहीं सक रहा था, अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये टूट जाएगा और यहां से क्या मिलेगा, वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर 3 जैसा क्वेश्चन है, नहीं, पहला क्वेश्चन on electrolysis what gases evolve, on electrolysis of water what gases are evolved। पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या गैस मिलेगा, we get hydrogen, we get oxygen, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दोनों गैस इक्वल मिलेगा? नो, वी विल नॉट गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ज्यादा मिलेगा? Which gas we get in the more in quantity? Hydrogen. Hydrogen आपको ज्यादा मिलेगा in comparison to the oxygen. Right. In a process, in a reaction, in the electrolysis process, suppose 2 liter hydrogen is formed, ऑक्सीजन कितना मिलेगा? ऑक्सीजन गैस कितना लीटर मिलेगा आप? If 2 liter hydrogen is formed, then how many liter oxygen will form? बता बेटा। अरे 2:1 है ना, we get 1 liter oxygen, है ना, we get the 1 liter of oxygen, नहीं? So जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, यहाँ भी आपको पिक्चर दे सकता है, ये प्लस माइनस नहीं देके फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है। ओके, सो जो ज्यादा क्वांटिटी होगा दैट मोर क्वांटिटी। ये देखो H2 है ना, H2O, तो हाइड्रोजन है, डेफिनेटली हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा आपको, ऑक्सीजन कम मिलेगा आपको, राइट? So, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड एंड एनोड। हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होगा, कैथोड में या एनोड में? हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा आपको? हाइड्रोजन H प्लस, so it migrate to negatively charged electrode, है ना? और कैथोड में हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन फॉर्म एंड cathode hydrogen gas and oxygen gas is formed as anode। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन इज फॉर्म एज कैथोड एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म एज एनोड, और हाइड्रोजन आपको डबल मिलेगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, राइट? सो फिर हम बता रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन may be carried out by heating, by passing electric current, by keeping material in the sunlight. Next, third type is a displacement reaction. Displacement reaction, blank page, displacement reaction। Move to the camera। अभी आपको मैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो रहा है क्या? आप कैमरा में आइए, मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको एक बताऊंगा यहाँ पर, दैट लास्ट गर्ल साइड। अभी आप देखो लेफ्ट हैंड मेरे पास, तुम कौन निकल जैसे कौन निकल, हाँ आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, इसमें देखिए, यहाँ पर देखो ये बच्चा अकेले है और आगे में 2 है ना? सो दिस, हाँ, सो दिस लास्ट गर्ल चाइल्ड, आप आ जाइए और एक को यहाँ से हटाओ, आजा। हाँ देखो वहां पर अभी प्लीज सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज गोइंग ऑन देयर, हटाओ, यस, वो पीछे चला गया। ये हो गया आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, है ना? देखो देखो सो ये हमने एक यहाँ पर एक आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया, ब्लैक डेट। So what is displacement reaction? A reaction in which one element displaces the other element, है ना? जैसे ए और बी एक साथ बैठा था, नाम बताना सही नहीं है, ए और बी एक साथ बैठा था, सी अकेले था, उसका कोई दोस्त नहीं है ना, लेकिन रिएक्टिव है ना, बट इट इज रिएक्टिव। वो अकेले इसलिए बैठा, बाकी सब पेयरिंग में बैठे हैं तो अकेला बैठ गया। अभी सी आया, सी आके यहां से एक को हटा दिया और एक नया दोस्ती बना दिया, दैट इज दोस्ती बनेगा सी और बी के साथ, और ए अकेला चला गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जो इनकमिंग होगा, जो हटाने के लिए आएगा, ये जो सी है यहां पर, ये सी थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा, है ना, उसका पावर ज्यादा होना पड़ेगा।
अगर उसका पावर कम है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो हम इसको जो तगड़ा, पावर, ये सब वर्ड बता रहे हैं, हम एक साइंटिफिक वर्ड देंगे उसको, दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट वर्ड इज अ more reactive. That word is a more reactive. A more reactive metal can displace a less reactive from a compound. That is called as a displacement reaction. जैसे आप देखिए, hydrochloric acid mixed with the zinc, then we get